Namaskar and welcome to Wisdom Roots, where we explore the timeless wisdom of the Indian knowledge system. In today's video, we will cover the scientific brilliance and ancient Indian metallurgy from iron, copper extraction to zinc distillation, bronze casting, and gold purification. All rooted deeply in Indian knowledge system. This is not just a history; there is a science. This is a technology, and this India global contribution to metallurgy. So stay with us, watch till the end, and rediscover how ancient wisdom shaped modern metal science. Ancient India was a pioneer in the field of metallurgy long before modern science understanding. Metal uses date back to the Indus Valley civilization, showcasing early smelting and alloying technique. Indian metallurgists mastered copper, bronze, iron, zinc, and high quality steel. Evidence of metallurgical knowledge is found in tools, religious artifacts, sculpture, and the large structure. प्राचीन भारत धातु कर्म मेटलर्जी इस धातु कर्म के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक समझ से कई सदियां पहले अग्रणी था. Techniques like rust-proof iron, zinc distillation were developed centuries ahead of other civilization. भारतीय धातु कर्मों तांबा, कांसा, लोहा, जस्ता, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील में निपुण थे. उदाहरण के लिए वुड्स स्टील से बनी तलवार और दिल्ली लोह स्तंभ जो सदियों तक जंग नहीं खाते हैं, आज भी एक उदाहरण है. लेट्स अंडरस्टैंड द मेटलर्जी इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में हम कौन सी मेटल्स यूज करते थे? कॉपर, टूल्स, वेसल्स एंड ऑर्नामेंट. ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन फॉर द स्टैचूज एंड टूल्स. गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ज्वेलरी एंड कॉइन्स. Iron for weapons and agriculture tools. Zinc, first large scale production in the world. Now let's understand one by one. A global wonder. Yes, we can talk about the global wonders in India. The one is iron metallurgy. Woods steel produced in South India, exported to the Middle East, used to make Damascus swords known for the shapes and strength. Key features: high carbon content with controlled heating. आयरन मेटलर्जी में हम बात करते हैं रस्ट रेसिस्टेंस आयरन, दिल्ली आयरन पिलर की. बिल्ट अराउंड 4th and 5th century CE. 7.2 meters tall, weight 6 ton, has not rusted for over 1600 years. Reason: high phosphorus content and formation of protective oxide layer. Let's understand the global wonders in zinc metallurgy. India's unique achievement. India was the first civilization to extract the metallic zinc through the distillation. Jowar mine, that is in Rajasthan. Zinc smelting from the 12th century CE. Advanced retort technology used to prevent oxidation. This technology spread later to China and the Europe. जिंक को जस्ता धातु कर्म भारत की अनूठी उपलब्धि रही है. ये भारत वह पहली सभ्यता थी जिसने जस्ता का डिस्टिलेशन शुरू किया. यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में धातु कर्म में वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल कितनी उच्च स्तर पर था. देखिए यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स मिलते हैं जो कि ग्लोबल वंडर है उस टाइम का. देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कोट मिलता है हमें रॉबर्ट हेडफील्ड का. इन्होंने बोला था उस समय पर रॉबर्ट हेडफील्ड इंग्लिश मेटलर्जिस्ट रहे हैं, उस टाइम पे बड़े फेमस और पॉपुलर रहे हैं. इनका कोट की हम अगर बात कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है अपने कोट में, भारतीय वुड्स स्टील यूरोपीय स्टील की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट है. यह कई पहलुओं पर अद्वित है. फिर हम बात करते हैं अल इद्रिस के कोट की, जो कि अरब के ज्योग्राफिकर रहे हैं एंड इजिप्टोलॉजिस्ट रहे हैं. इन्होंने उस समय ये बात बोली थी कि हिंदू लोग लोहा बनाने में निपुण हैं और भारतीय स्टील की गुणवत्ता से बेहतर कुछ ढूंढना असंभव है. सो दीज वर द ग्रेट कोट. जो इंडिया में मेजर माइनिंग रीजन उस टाइम पे क्या रहे हैं उनकी हम बात करते हैं. कॉपर मेनली राजस्थान खेतरी में हुआ करता था. गोल्ड की बात करते हैं तो कर्नाटक कोलर वॉज द मेन रीजन दैट टाइम. आयरन की बात करें तो बिहार, झारखंड, साउथ इंडिया. Zinc, ज्वार, राजस्थान. These were the major mining regions from the ancient India. Now let's understand the extraction process. Extraction is Nishkarshan. Iron extraction process in ancient India. Mining iron ore collected from the surface and shallow mines. Ore dressing, ore crushed, washed and roasted to the remove impurities. Smelting, ore heated with charcoal in clay furnaces using blows. Reduction, carbon remove oxygen from the iron ore. Bloom formation, spongy iron mass formed. Hammering, bloom ham to the remove slag. Refining, reheating the forging produce pure wrought iron. तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन आयरन का देख सकते हैं उस टाइम पर क्या था. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर को तांबा बोला जाता है.
Copper extraction process in ancient India, mining copper ore extracted from the surface and underground mining, Khetri, Rajasthan. Ore dressing, ore crushed, washed and roasted to remove impurities and moisture. Smelting, ore heated with charcoal in clay furnace using blows. Reduction, carbon reduced copper oxide. Slag removal, impurities separated as slag and removed. Casting and refining, molten copper poured into the molds and redefined by reheating and hammering. This process enabled the production of tools, vessels, coins and the bronze alloys in ancient India. इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राचीन भारत में उपकरण, बर्तन, सिक्के, कांस्य, मिश्र धातु आदि तैयार की जाती थी. Let's understand the extraction process of zinc. Mining, zinc ore, calamine extracted mainly from the Jawar mines, Rajasthan. Ore dressing, ore crushed, washed and roasted to remove impurities. Close smelting, ore heated with charcoal in sealed clay retort. Distillation, zinc vaporized at the high temperature and condensed in a lower chamber. Collection, condensed metallic zinc collected after cooling. Refining, zinc purified for use in alloy and medicine. Ancient India was the first civilization in the world to extract metallic zinc by distillation centuries before Europe. That was really great. Bronze is a combination of copper and tin. So copper extraction, copper first extracted from its ore by mining, smelting and refining. Tin collection, tin obtained from tin bearing ores through simple smelting. Alloying, molten copper mixed with the measured amount of tin. Heating, mixture heating in clay furnace using charcoal and blows. Casting, molten bronze poured into stone or clay mold. Finishing, object polished and shaped by hammering. This process produces stronger and more durable bronze used for the tools, weapons, statues and ornaments in ancient India. Now let's understand the extraction process of gold extraction. Placer mining, gold collected from the river sand by washing. It was the panning method. Hard rock mining, gold bearing quartz rock mined from shallow shaft. Crushing, rock crushed using stone grinder. Washing, crushed material washed to separate heavy gold particles. Smelting, gold heated in clay furnace to remove impurities. Refining, repeated melting and purification produce pure golds. This method enabled ancient Indians to produce high quality gold for jewelry, coins and rituals. Now, metallurgy in ancient India. Yes, our ancient India was the brilliant in metallurgy, जिससे हम आज भी influence होते हैं. So we can understand the present achievements of India in metals, modern India. India is today a global leader in metal production, technology, innovation, building on its ancient metallurgy legacy. Research and innovation, world-class institutes, IITs, IISc, BARC, DMLR, development of lightweight, high strength, corrosion resistance material. Let's talk about the global presence. Indian metal companies operate mines and plants across Asia, Africa, Europe. Major exporters of steel and aluminium products. यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत का मेटलर्जी में, धातु क्रम में हमेशा से ही उत्कृष्ट योगदान रहा है, जिसकी लीगेसी को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम इन्फ्लुएंस हैं. आईआईटी मद्रास ने इसमें सबसे पहले काम करना शुरू किया. तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि शुरू से ही मेटलर्जी में प्राचीन भारत हमेशा उत्कृष्ट योगदान देता रहा है. So today we explored how ancient Indian metallurgy was not just a craft but a highly developed scientific knowledge system that laid the foundation of modern metal science. If you found this video informative, please like, share and subscribe to the Wisdom Roots for more such videos that connects Indian knowledge system with modern science and technology. Stay tuned with us. Thank you for watching.